राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे भीमराव, 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 साहिब मेरे संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा। तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी अवस्थाओं से खिला चमन, कोटि कोटि भीमराया तुझको नमन। साहिब मेरे भीमराव, 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 साहिब मेरे भीमराव। मैं डॉक्टर वेलकम करता हूं और चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर्स एंड अदर गेस्ट सभी को दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। और वॉलंटियर से मेरी ख्वाहिश है चीफ गेस्ट वाइस चांसलर ऑफ द अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर ग्लोबल पीस और डायरेक्टर ऑफ द अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर ग्लोबल पीस आ चुके हैं और हमारे बीच स्पेशल इनवाइटी। Kindly welcome with applause, please. डॉक्टर शेख अब्दुल शरीफ साहब के लिए कपलेट। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल हैं, कांटों से भी आई खुशबू। Mr. Latif to kindly escort Miss. I request Miss Padma Priyanka ma'am to kindly escort Sheikh Firoza Begum, Women and Child Department and Standing Consulate of Waqf Tribunal. Kindly welcome with applause, please. डॉक्टर शेख फिरोजा बेगम मैडम के लिए तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। ज़मीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। Now, I request Dr. Azhar to kindly escort Dr. Rajendra Singh Thakral sir, South Indian President of International Human Rights Protection Commission. कॉर्नर में लिख दो। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठकराल सर के लिए दोस्तों इनकी तारीफ की ज़रूरत क्या है, दोस्तों इनकी तारीफ की ज़रूरत क्या है। फूल जब पास से गुजरे तो महक जाता है। Please welcome with applause. कुछ लोग अपनी पहचान खुद बनाते हैं, कुछ लोग अपनी पहचान खुद बनाते हैं और कुछ अपनी पहचान से दुनिया को रोशन कर देते हैं।
I request Mr. Lateef to escort. I would like to invite Dr. Sheikh Farid Shoaib Rahman, sir, National Chairman of IHRPC. डॉक्टर शेख फराज शोएब रहमान सर के लिए मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूँगा, मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मुकाम ना दो मैं खुद मुकाम ले लूँगा। जिनकी शख्सियत से महफिल को शान मिलती है, जिनकी शख्सियत से महफिल को शान मिलती है, जिनके अल्फाज से हर दिल को पहचान मिलती है, आज वो हमारे दरमियान मौजूद है, जिनके आने से हर पल को एक नई उड़ान मिलती है। I request Mr. Azhar to kindly assemble the squad. I humbly request Dr. HMD Mujahid Sir, National President of International Human Rights Protection Commission. डॉक्टर HMD मुजाहिद सर के लिए खुशबू मेरे खुलूस की पहुंची कहाँ कहाँ, खुशबू मेरे खुलूस की पहुंची कहाँ कहाँ, किस किस मकान से मुझको सदा दे रहे हैं लोग, किस किस मकान से मुझे सदा दे रहे हैं लोग। Next, I request Mohsen to escort. Satnam Singh. I request Satnam Singh sir to kindly escort. I request Dr. Satnam Singh sir to kindly escort Dr. Pankaj Jacob Mahathur sir, Director of the American University, USA. Kindly welcome with the applause, please. डॉक्टर पंकज जैकब सर के लिए मुझको इससे क्या गरज सुबह है या शाम है, मुझको इससे क्या गरज सुबह है या शाम है, खिदमत अहले चमन हर वक्त मेरा काम है, खिदमत अहले चमन हर वक्त मेरा काम है। Next, प्रियंका माँ। प्रियंका जस्टिस बादशाह नवाज खान को बुलाए, बलराम साहब को बोलो, बादशाह नवाज खान को बुलाना है। I request Dr. Balram Swami sir to kindly escort our next esteemed guest, Justice Basha Nawaz Khan sir. जस्टिस बादशाह नवाज खान सर के लिए महफिल में 100 चिराग जलाने के बावजूद, महफिल में 100 चिराग जलाने के बावजूद, जब तक आप ना आए उजाला ना हो सका, जब तक आप ना आए उजाला ना हो सका। Now Padma madam and Jodi madam. Both. I request Dr. Padma ma'am and Dr. Judy ma'am to kindly escort Dr. Pratima Madhukrishnan, Vice Chancellor of American University of Global Peace. All the members please raise. I request all the members to kindly raise from the seat to welcome the dignitary. डॉक्टर प्रतिमा मैम के लिए प्लीज बी सीटेड। Thank you. प्लीज। आज की हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर प्रतिमा मैम के लिए 4 लाइन मैं पेश कर रहा हूँ। दुआ है घर हमारे मेहमान बार बार आए, दुआ है घर हमारे मेहमान बार बार आए, 1000 बार वो जाएं 1000 बार वो आएं। ये खुश नसीबी है अपनी, ये अपनी किस्मत है, ये खुश नसीबी है अपनी, ये अपनी किस्मत है। यूँ आए सहने चमन में, यूँ आए सहने चमन में, लिए बहार लिए आएं। Let's begin the program with the holy verses to maintain the communal harmony. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Let us all stand together for the soulful patriotic song Sare Jahan Se Acha, celebrating the spirit of our nation and together. I request everyone to please raise from the seat. से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सब बोले हैं सखी ये गुलसितां हिंदुस्तां हमारा हमारा सब बोले हैं सखी ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिसके दम से गुल के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सब बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। Thank you everyone, please be seated. क्षमा जलाकर मैं आज के चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर्स क्षमा जलाकर आज की महफिल का Let us begin with the lighting of the lamp, a symbol of knowledge, hope and new beginnings. I request our honorable guests to kindly join us for it. Let us all rise in respect and reverence as the lamp of knowledge is about to be lit.
Now, distinguished awardees and IHRPC family members and our Honorable Pratima Ma'am, Vice Chancellor and our Director Jacob Sir, and all the ladies and gentlemen, a very good afternoon. Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. I am Dr. H.M.D. Mujahid, President of International Human Rights Protection Commission. Today, proud to mark a milestone, why? Because this is our 5th honorary doctorate event with collaboration American University, USA, which is the prestigious university, collaborated with me. We are very happy to know. We gather here today to honor those rare souls who do social service without expecting returns, without any recognition from the society, without fame, without reward award. They are doing their service. We are very happy to award such a kind person in this honorable honorary doctorate event. I am welcoming you by the bottom of heart. Please welcome this program and congratulations to very much to all the awardees who are receiving awards in this program. At IHRPC, we nominate and celebrate such a selfless warriors, awarding them this honorary doctorate, not as an end, but as a fuel to ignite, ever greater service. We call as a unsung heroes who build bridges where others sees walk. మీరు బ్రిడ్జెస్ రెడీ చేస్తారు, ఎక్కడైతే వేరే మనుషులకి ఇక్కడ వాల్ ఉంది, మేము దాటలేము, దీన్ని మనం క్రాస్ చేయలేమనే పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ఎవరైతే నా ముందర కూర్చున్నారో అవార్డీస్, మీరు ఒక బ్రిడ్జెస్ని రెడీ చేస్తారు. వై? బికాస్
to do the service without expecting anything from the society and returns. As we stand just 2 days before, we know about that. On April 14th, great personality, Dr. Bhimarao Ambedkar Jayanti is there on 14th of April. We know he is the architect of Indian Constitution, and also we know he is very kind and he built a constitution for our India. Let us pass and draw a inspiration reality of our Dr. Bhimarao Ambedkar Garu. He is the eternal champion of oppression. He born into unimaginable, and he stands for caste discrimination. He stands for caste discrimination and ensuring dignity and fighting for the injustice, and he done a justice for millions of people. Ambedkar Garu, Dr. Bhimarao Ambedkar Garu taught us that true power, it means true power not lies in titles only, but as uplifting the marginalized. Life should be a continuous education. Ambedkar Garu says, education that brings the change between social and economic, on his Jayanti of 14th of April. We are very too happy. We are days before only we are celebrating our Dr. Bhimarao Ambedkar Jayanti on the occasion of this honorable doctorate program. Let the program echo his legacy. Just as he fought for human rights, we know he fought for human rights. Do you our audience? You people also fight for the rights of human? I am expecting this thing from you. So do you. Your service honors his vision. May it inspire us all. Eradicate injustice one action at a time. I want to share one motivational story today. The story about one Odisha person. The name is Lakshman Singh. Odisha lo oka village undedi. ఆ విలేజ్ లో 2005 లో డిసాస్టర్ జరిగింది. దానివల్ల అక్కడ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్, చాలా ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ పేర్లు ఇల్లు లేకుండా ధ్వంసమైనాయి. అలాంటి టైంలో లక్ష్మణ్ సింగ్ అనే పర్సన్ ఏం చేశారంటే, దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఆల్సో. ఎందుకంటే అది వెయిట్ చేయకుండా he done a thing. What it is, 10,000 mango trees కి స్టార్ట్ చేశారు. బ్యారెన్ ల్యాండ్ ఉంటుంది కదా, బంజర భూమి. ఆ బంజర భూమిలో 10,000 మ్యాంగో ట్రీస్ కి ఇచ్చేసారనమాట. ఎందుకోసం అంటే టు ఫీడ్ సచ్ ఎ కైండ్ పర్సన్స్ ఆఫ్ దట్ విలేజ్ పీపుల్. 500 ఫ్యామిలీస్ దానివల్ల వెతికారు. ఆ 10,000 ట్రీస్ ని వాళ్ళు అక్కడ ఇచ్చేయడం. అండ్ లక్ష్మణ్ సింగ్ గారు ఎవరైతే సోషల్ వర్కర్ ఉన్నారో, ఆయన ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ 10,000 ట్రీస్ ఒకటే కాదు, దాని తర్వాత కూడా ఆయన ఏం చేశారంటే న్యూట్రిషన్ క్యాంప్స్ అరేంజ్ చేశారు. ఎలాంటి క్యాంప్స్ అంటే సైక్లింగ్ 20 కిలోమీటర్స్ ఎవ్రీ డే ట్రావెల్ చేశారు. మేము దాదాపు యంగ్ యూత్ ఉన్న పర్సనాలిటీసే ఒక 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్ సైక్లింగ్ చేస్తేనే మనం అలసిపోతాం. ఈవెన్ నేనే సైక్లింగ్ చేయాలంటే అలసిపోతాం. అలాంటిది ఆయన ఏజ్డ్ పర్సన్, సీనియర్ సిటిజన్, ఇన్ దట్ ఏజ్ 20 కిలోమీటర్స్ ఎవ్రీ డే ట్రావెల్ చేసి
వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్, మంచి న్యూట్రిషన్ ఉన్న ఫుడ్ని పర్చేస్ చేసి బై ఓన్ ఫండ్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద అదర్స్ పర్చేస్ చేసి 200 చిల్డ్రన్స్కి డైలీ ఫీడ్ చేసేవారు. 200 చిల్డ్రన్స్కి డైలీ ఆ న్యూట్రిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్యాంప్స్ అరేంజ్ చేసి ఆ పిల్లలకి ఆకలి తీర్చేకి ఇలా ఎన్ని ఇయర్స్ చేశారు. ప్రజెంట్ ఇప్పటికి కూడా దానికి ఒక మిషన్ పేరుతో పిలుస్తారు, గ్రీన్ లైఫ్ మిషన్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ స్టోరీ ఆర్ క్రియేటివ్ స్టోరీ. దిస్ ఇస్ ఒరిజినల్ స్టోరీ విచ్ ఇస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఒరిస్సా స్టేట్ లో ఒక విలేజ్ లో జరిగిన స్టోరీ. లక్ష్మణ్ సింగ్ అనే పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అక్కడ సిచ్యువేషన్ హ్యాండిల్ చేసిన ఒక రియాలిటీ గురించి నేను ముందర ఈరోజు షేర్ చేస్తున్నాను. 200 చిల్డ్రన్స్ ఆయన ఫీడ్ చేసేవారు. తర్వాత అక్కడ ఆకలి చావు ఉండేది, మోర్టాలిటీ ఆకలి చావు. అలాంటిది అక్కడ 40% వరకు డిక్రీస్ కూడా చేశారు ఆయన, లక్ష్మణ్ సింగ్ అనే పర్సన్. దాని తర్వాత ఆ లక్ష్మణ్ సింగ్ అనే పర్సన్ దగ్గర కొందరు పోతారు, లైక్ సమ్ గుడ్ హార్టెడ్ పర్సన్, మంచి చేసేవారు, ఇంకా మంచి చేయాలి సమాజానికి అని కోరేవారు. లక్ష్మణ్ సింగ్ దగ్గర వెళ్ళారన్నమాట. వెళ్ళిన తర్వాత ఆ లక్ష్మణ్ సింగ్ సార్ దగ్గర అడిగారు, ఏమని అడిగారు, లక్ష్మణ్ సింగ్ వై యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్, మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారు, దీనివల్ల మీకేంటి ప్రయోజనం, మీకు గుర్తింపు లేదు, మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే ఆయన ఒక మాట చెప్పారు, సర్వీస్ ఈజ్ మై డిగ్రీ, సర్వీస్ ఈజ్ మై డిగ్రీ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఫ్రమ్ ఏ చైల్డ్హుడ్ బెరీ ఈజ్ మై హానర్ అన్న. చిన్న పిల్లవాడికి కడుపు నింపడమే నా ఒక మంచి రెప్యూటెడ్ హానర్, మించిన హానర్ నాకు లేదని చెప్పి ఆయన లక్ష్మణ్ సింగ్ అనే ఆయన అక్కడ ఇంత పెద్ద మాట చెప్పారన్నమాట. Honorary doctorate event. You people are today's our Lakshman Singhs. అప్పటికి ఆయన చేశారు, ఇప్పటికీ ఆయన 65 years. ఈరోజు మీ ప్రతి ఒక్కరిలో అలాంటి లక్ష్మణ్ సింగ్ని నేను మీ ముందర చూస్తున్నాను. అండ్ అలానే ఈ అవార్డు ఏదైతే మీకు ఈరోజు వస్తూ ఉందో, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ జస్ట్ హానరీ డాక్టరేట్ అవార్డ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ అంబేద్కర్ మూమెంట్ అవార్డ్, which is recognized and to propel you further, to forward you further, to push you further, to do more service in society. Let it still you deeper dreams and bolder service and touch more lives in society. మీరు ఇంకా చాలా ఇలాంటి సర్వీస్ చేయాలని చెప్పి ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు నాట్ ఓన్లీ సోషల్ సర్వీస్ వర్కర్స్, సోషల్ సర్వీస్ ఒకటి చేసేవాళ్ళు కాదు, చాలామంది బిజినెస్ చేస్తూ, గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తూ, ప్రొఫెషనల్ వాళ్ళ ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తూ, వాళ్ళ జాబ్ బిజినెసెస్ని చేస్తూ సోషల్ సర్వీస్ మేము సమాజం కోసం ఎన్నో ఒకటి చేయాలి, యాజ్ పర్ మై హ్యుమానిటీ, యాజ్ పర్ అవర్ హ్యుమానిటీ మేము ఇలాంటి మానవత్వాన్ని మనం చూపించకపోతే ఎవరు చూపిస్తారని చెప్పి ఇలాంటి కైండ్ హార్టెడ్ పర్సన్స్ మీలాంటి వాళ్ళు మన సొసైటీలో చేసేదే చాలా పెద్ద సర్వీసెస్. అలాంటి సర్వీస్ చేసే ఆర్గనైజేషన్ మన ఇంటర్నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ కమిషన్ ఆర్గనైజేషన్. ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో యాజ్ ఏ ఫ్యామిలీగా నా ముందర అవర్ అవార్డీస్కి వెరిఫై చేసి మన యూనివర్సిటీ, అమెరికన్ యూనివర్సిటీ నుంచి డాక్టర్ సార్ మిమ్మల్ని ఈరోజు నామినేట్ చేసి ఇక్కడ ఈ హానరీ డాక్టరేట్ అవార్డు ఇస్తున్నందుకు నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఇలాంటి అవార్డ్స్ మీరు మరెన్నో రిసీవ్ చేసుకోవాలని చెప్పి యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ నేను కోరుకున్నాను. అండ్ అలానే ఇలాంటి రోజులు ఇంకా చాలా రోజులు రావాలని చెప్పి నేను కోరుకున్నాను. అండ్ అలానే నేను మీ నుంచి ఒకటి కోరుకున్నాను, అదేమంటే ఐ వాంట్ యూ to pledge with me. Please repeat after my word. All Please repeat after my word. Doctor, it is time. Raise your seats, please.
No, please be seated and repeat after my words. As pledged, please raise your hand in front. More service, more humanity, more unity. Jai Hind. Thank you. Thank you for giving this opportunity. Thank you. Thank you very much, sir. Everybody. बस समय नहीं लूँगा आप लोग सबका, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी 11 बज चुका है, 11 क्रॉस, and I will not be much official today. हम आए हैं यहाँ पे आप लोग के साथ सेलिब्रेट करने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि विभिन्न रिलीजन्स के लोग, सिख, ईसाई, मुसलमान, we see many Indians sitting here. We should thank IHRPC to bring a different orientation to be shown here. Thank you Justice Nawaz Khan sir, कि आपने टाइम निकाल के आए इस बिजी वक्त पे इस फंक्शन के लिए to honor this distinguished people. I honor Takral Saab, jo he has everybody on the dais, IHRPC ke Mujahid, Shoaib, Advocate Sahiba Madam, and apart from that again my mother, Vice Chancellor Mrs. Madhu Krishan. American University, हम 32 साल से चला रहे हैं, 32 years old यूनिवर्सिटी हमारी फिजिकल कैंपस है यूएस में, और हम 127 देशों, we are 127 nations affiliated with small colleges and university to operate full-fledged doctorate program. इंडिया पे हम 43 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ affiliated है, जिसमें हम उनके प्रोफेसर्स, उनके डीन और उनके चांसलर्स को हम डॉक्टरेट देते हैं on full fledged. We have been very accredited, NOC opted with UGC in India. So आपकी जो एप्लीकेशन जो मुजाहिद ने हमें फॉरवर्ड किया IHRPC के द्वारा, we came to conclusion कि आप जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे भाई क्रांति बैठे हैं सामने, जो जर्नलिस्ट बैठे हैं, सिख कम्युनिटी के हमने प्रोफाइल देखा, जो कम्युनिटी रियलिस्टिक सर्विस कर रहे हैं, एडवोकेट कोई लॉ पढ़ा रहे हैं, तो डिफरेंट पीपल देयर डूइंग समथिंग। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट शेयरिंग द पीस कम्युनिटी टुवर्ड्स पीस सोसाइटी। और हमारा एक ही, we are affiliated with United Nations in 10 points in that to celebrate and share the peace in the community what we reside. I should say IHRPC congratulations कि आपका 5th program हमारे साथ है, and we will be very glad to take this program to the next level. और बहुत soon IHRPC से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम अब हमारे साथ इंटरनेशनली करें। We do every year साउथ एशिया में 2 इंटरनेशनल प्रोग्राम हम करते हैं, और हर साल 2 प्रोग्राम हम हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में करते हैं। And every year 1 program we do in US campus, जो मंथ ऑफ सितंबर होता है। तो IHRPC के मुजाहिद और सोहेब से रिक्वेस्ट है कि आप अपने नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे साथ अगर आपसे हो सके ट्राई कीजिए कि we do an international program with us, where we recognize more better people, more people to do better things towards this society. तो मैं ज़्यादा वक्त लेके आपको स्पीच में बोर नहीं करूँगा। We will go to the next thing, and जितने जल्दी हो प्रोग्राम को हम शुरू करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for addressing the gathering and briefly elaborate. Dr.
what the different areas, the different checkups are who are coming. All of you very much welcome to the Hyderabad. I am Sheikh Feroz Begum, as a standing committee for the tribunal, as well as a chief legal advisor of the International Human Rights. It is my honor and fortunately that I am the one of the member of this family. I am very much thankful to the God that I am working with the IHRPC, that it is very much honor for me. I congratulate all the who are taking the doctorate of the students who are receiving the doctorate. We are doing the service for the society, and it is very honor to all of us. I came here and I participate along with you. I congratulate all the doctors for their dedication and hard work. Many you continue the justice and human rights. Human rights always stands for the truth. It is very difficult, but you always stand for the truth. There is no any recognition for the whatever you are doing the service, but it is only the self-satisfaction. As Uday said, that he is the president of this community. It is an organization. There is no recognition. No one is accept anything from the what we are going to take the benefit. Anything, only the self-satisfaction for the whatever we are doing the service to the towards the society. As I know the Mr. Ravindra Sir, he is the registrar, Amberpet registrar, he is doing the, he is having the service. Actually he is visit to the Kidney office, they are very busy, but I know he is very that he did the service for the poor people and for such type of person who are doing the service, there is no recognition. For such type of people, Mr. Jadhav sir and Karima madam will take initiate for to honor them, to congratulate them. If this produce encouragement and cooperation from the little people, expect anything from the whoever the country. Thank you and all I wish you all the. Thank you, ma'am. I heartily request our national chairman, Dr. Sheikh Parashwe Brahman sir, to inspire the day with his golden words. Good afternoon to all, because it's almost 12 o'clock. As well as Assalamualaikum, Sasriyakal, అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఎవరైతే నలుగుల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారో ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. Respected dignitaries on the dais, and especially Justice Nawaz Khan sir and all the other dignitaries on the dais, and my beloved President, National President Dr. Mujahid sir, Thakral sir, and Rajendran sir, Jacob sir, Pratimana. Thank you for giving me this golden opportunity to stand before you and to say some few lines of today's gathering. First of all, you are all, just now as Jaisa said that you are all unsung heroes. Absolutely right, you are all unsung heroes only. But the important thing is that your new journey, your new chapter starts from now. जितने भी दिन आपकी मेहनत, लगातार आपकी मेहनत जो लगी हुई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आज एक प्लेटफॉर्म पे आके जो डॉक्टरेट ले रहे हैं आप, ये खत्म हो गया कि हम लोग का डॉक्टरेट ले लिए, यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट नहीं लिए, अपने नाम के सामने डॉक्टर लगते हैं। तब डॉक्टर के माने असल में है क्या? Actually, why you will be called as a doctor? What is the reason? That you must know very, very well. Otherwise, taking the doctorate, if you do not know about the importance of the doctorate, I would like to invite our next awardee बोल के name लेना ना. This really seems about a sense of senses thing. So मैं आपको ये बात से बताना चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टरेट का प्रोग्राम यहाँ मुनाकिद किया गया है, जो ये पैमाने में आपको एक इकट्ठा करके हर कम्युनिटी के लोग को चुना गया है कि आपको डॉक्टरेट किया है, कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग सर्विस कर रहे हैं,
लेकिन आपको चुना गया है, आपका एप्लीकेशन भेजा गया, उसके साथ साथ स्क्रूटिनी होगी और उसके साथ आपको सेलेक्ट किया गया। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ, उसके बाद ही जाके आपको एक डॉक्टर का लक़ब देने के लिए तय किया गया। There will be a continuous process to get the doctorate. Doctorate simply apply करके आगे ये नहीं होता है। आपका छोटा सा काम भी बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी सी चीज भी बहुत खूबसूरत अंदाज में दिखाई जाती है। यहाँ सबको पता है कि हम काम जो करते हैं सिर्फ इंसानियत के लिए काम करते हैं, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए या ना तो किसी के अवार्ड लेने के लिए या किसी को कुछ। यहाँ तो अभी एक ट्रेंडिंग न्यूज़ हो गया कि अगर जब कुछ वर्क कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे डाल दे रहे हैं, लाइक्स व्यूज के लिए डाल दे रहे हैं या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए डाल दे रहे हैं। ये ऐसा हो रहा है। ओके ठीक है, तो वो करने से अगर 4 लोगों में अगर बदलाव आ रहा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज वेल एंड गुड। बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि उसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो क्या है? When the right hand is giving, the left hand should not be actually what they are giving. That is very 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 important. But हम लोग सब भूल गए, सोशल मीडिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिए हैं कि वो जाता है एक 5 बिस्किट पैकेट जाके देता है कि उसी को इस तरह से पिक्चराइज करता है कि मैंने एक ऐसा बड़ा काम कर दिया कि मैंने ह्यूमैनिटी को बचा ली। नो, इट डजंट मेक सेंस। आज तक कोई ह्यूमैनिटी को नहीं जीत सका, ना जीत सकते भी हैं, बस कोशिश कर सकते हैं। लगातार निरंतर हमसे जितना हो सके उतना काम कर कर हमारे अमाल, हमारी अच्छाई जब हम ऊपर जाएंगे, जब when you say question on the doomsday, then you will come to know that actually for what you have been sent to what into the world. आप किस वजह से भेजा गया था, आप क्या करें क्या नहीं करें, ये हर किसी को हिसाब देना जरूरी है। अच्छा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अच्छा करने के बावजूद भी बहुत से बातें नामे बनेंगे। When you are doing the good things, always become what deaf. I'll tell you what a small story. There is a group of fox. Sorry, I made a mistake. There are some group of frogs, and there was a competition held among the fox. And then one fox is striving very hard to reach on the top of the pole. एक ऐसा कंपटीशन है कि जो उसको बोलते हैं मेंढक बोलते हैं, जो उनका ग्रुप है। तो हर मेंढक ऊंचाई पर चढ़कर वो पोल के टॉप पर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। सब लोग चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, सब लोग चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, सब लोग चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं चढ़ पाया। लेकिन एक फ्रॉग इस तेजी से चढ़ा, ये फ्रॉग सबसे चढ़ा, फाइनली वो टॉप रीच हो गया। तो बाकी के फ्रॉग्स पूछे ये कैसा पॉसिबल हुआ, हम भी तो सेम बिरादरी के हैं, हम नहीं चढ़ पाए, ऐसे तो तुम क्यों कैसे चढ़ पाए? तो वो बोला कि जब मैं चढ़ रहा था, जो भी फ्रॉग्स आप लोग मेरे साथ थे, आप बोल रहे थे, क्या पुकार रहे थे कि अगर जी वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर सकोगे, तुम्हारे हाथ से नहीं होगा। वो बोला कि मैं डेफ हो गया था, मैं समझ रहा कि आप लोग मेरे को एनकरेज कर रहे थे, इसीलिए मैं चढ़ गया। The moral of the story is, कभी भी क्यों ना हो, जब अच्छा ही काम करने जा रहे हैं, अपने आप को डेफ बना लीजिए। क्योंकि बगल में 4 लोग रहते, क्या मिलता जी आपको, क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, बाजू में रहते, साथ में बैठे, चाय पीते, टाइम गपशप लगाते और पैसा जितना चाहे उतना खर्चा करते। उन्हें ही बोलते कि भाई तू कर रहे थे, क्या था, जरूर मिलता। वो जो कंटेनमेंट, जो सेटिस्फैक्शन जो अंदर से जो मिलता ना, एक को मदद करने के बाद। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, लाइव एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। When I was coming from Bangalore last month जब मैं बैंगलोर गया हुआ था, सडनली मेरा कार का टायर बस्ट हो गया। Even there were no tools for my
Sadar, I lost all my tools water to make it prepare water to fix it for the stepney. तो क्या करूं मेरे को पता नहीं चला। सडन से मैंने मोबाइल निकाला और जो सराउंडिंग्स में जो एरिया है, जो बुनियाद डाली हुई है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के लिए, जो मुजाहिद सर और मैं 6 साल पहले इसकी बुनियाद डाली थी, फोन उठाया, घुमाया, कॉल करा, सर ऐसा सब हुआ है, मेरा ये प्रॉब्लम है, उनकी मैंने बताया। विदिन नो टाइम, विदिन 20 मिनट्स पूरी की पूरी टीम आ गई। अरे सर का टाइम, पहले तो पूछे कि सर कुछ हुआ क्या, सर एनी इंजुरीज, कुछ हुआ क्या? ये क्या है? दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग द पीपल। जो हेल्प करके, जो एक प्लेटफॉर्म पे लाके, जो सबको अटैच करके, जो इंसानियत को जो जिंदा रख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, जो इंसानियत को जिंदा रख रहे हैं, मदद करके इंसानियत को जगा रहे हैं, ना कि मदद करके अपना आप को बढ़ा रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। वो आए 20 मिनट से इमीडिएट से तकलीफ कर दिए और बोले कि सर और कुछ। दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। ये होती है ह्यूमैनिटी। करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ये एजेंडा लेके चलना है। ह्यूमन राइट्स जो है आवाज बनने के लिए ही है। ह्यूमन राइट्स ये है कि आवाज उठाने के लिए ही है। उसके साथ साथ विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, सर इतना कर रहे आप, आपको क्या आ रहा सर? नहीं लो सर, कुछ ना कुछ आता रहता। यस, आ रहा, दुआएं आ रहे हैं, हर किसी के दिलों में जगह बना रहे हैं, हर किसी के जुबान पे हमारा नाम निकल रहा है, हर कोई हमारे बारे में डिस्कस कर रहा है। That is a great achievement that we are achieving, being on IHRPC team. Those who are award in the IHRPC team, so all of you please make a big round of applause for all of us, all of you, everybody. यही तो हमारा काम है, इसी का अवार्ड, यही से हमारा काम है, यही हम मरते दम तक करते जाएंगे। कोई किसी को भूखे को खाना खिला रहा है, कोई किसी को हॉस्पिटल लेके जाकर ट्रीटमेंट करवा रहा है, कोई किसी को पढ़वा रहा है, कोई किसी के अपने माँ बाप के नाम पर कुछ दे रहा है। ये सोच के नहीं दे रहा है कि मेरे को क्या मिलेगा, ये सोच के देता कि मैं जो भी दे रहा हूं बस अल्लाह भगवान ईश्वर इससे खुश हो जाए, इस वजह से दे रहे हैं, ना कि मैं कर लिया मेरे को सेटिस्फेक्शन आ गया। सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही मिलता है। तो मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूं, जब पानी नहाते हैं तो लिबास चेंज करते हैं, जो पसीने से नहाते हैं तो वो इतिहास बदल देते हैं। अपने पसीने को बहाओ और इतिहास बदल दो। इतिहास किस लिए बदलना है? मेरे लिए नहीं, सबके लिए बदलना है। हम खुश रहना है और उसके साथ साथ सभी भी खुश रहना है। ये सोचना बहुत जरूरी है। डॉक्टरेट अभी आपको यहाँ पे दे देते, receiving the doctorate and taking the award doesn't make a sense. The real sense, adding some colors. We are answerable for the society and we are answerable at least but not least. He is there, he is watching. ये दिमाग में रख के चलते हुए काम करिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक बात बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ हमारे नवाज खान जस्टिस साहब के लिए। ना झुके ना रुके, सच का रास्ता दिए, जस्टिस नवाज खान ने इंसाफ को जिंदा किए। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। नो, अब मैं दावत ज़हमत देता हूँ डॉक्टर प्रतिमा मैडम से, वो वाइस चांसलर द अमेरिकन यूनिवर्सिटी फॉर ग्लोबल पीस, वो तमाम ऑडियंस से अपने कीमती अल्फाज पेश करें। और मैडम के लिए मैं एक शेर कहता हूँ, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। क्या भी ये तेलंगाना की तरफ से है मैडम।
वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी हम अपने घर को देखते हैं। थैंक यू। Respected guests, Justice Saab and other people on the dais, and respected awardees and other children who are here because you are the children only. You can see my son on the dais. One was saying like to, I'll not take much of your time because today being Sunday and the function has been organized and we are here to award to recognize people who are doing work for the society. And this program has been organized by Human Rights, that is called Manav Adhikar in Hindi. But मेरी आपसे एक गुजारिश है कि हमारे लिए, जैसे कि अभी मुझे सबने बताया कि 2 दिन के बाद हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्म दिवस पुण्यतिथि होगी, जिसको हम 2 दिन पहले यहाँ पे मना रहे हैं। तो उन्होंने तो हमें संविधान में काफ़ी अधिकार दिए हैं, बट हमारे जो अधिकार हमको मिले हैं और हमारा सोसाइटी के प्रति क्या अधिकार है, हमें ये भी जागृत करना है। केवल अपने अधिकार लेने के लिए नहीं, हमें सोसाइटी को कुछ देना भी है। और उसी के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं कि जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज में जो होते हैं, जो मतलब वहाँ पे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं उनको ही रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज में हर एक बंदे का एक दायित्व होता है। They have a responsibility towards the society, and they are really working, but they have not been recognized. And today we are here in the celebration to the Human Rights Organization to recognize their children who are working. And today is not the last day for you all. Today the journey is starting. But the same way, they are requesting you from your platform, please recognize who has not been recognized so far. That is my humble request. In every field, wherever you are working, even मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके मन में समाज के प्रति कोई काम करना चाहता है, उसके पास जितनी अपनी व्यक्तिगत धन है, उसके अनुसार वो अपने गांव के बच्चों के लिए स्कूल या कोई स्कूल या कोई सारी सुविधाएं देता है, वो भी अपने समाज के लिए कुछ दे रहा है। केवल पढ़े लिखे लोग किताबों के कारण ही नहीं देते हैं, तो हमने उनको भी आदर देना है। जैसा हम अभी शुरू में कहे थे कि हम लोगों के अंदर पे कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, कि कोई भी धर्म हमें गलत चीजें नहीं सिखाता। ये हमारे ऊपर एक हम उसको कैसे फॉलो करते हैं। हम भाई बहन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, जिसके लिए आज हम एक मतलब इस रूम पे एक साथ बैठे हुए हैं, कि कैसे हमें गर्व लगता है। बाकी सारी चीजें तो लोगों से आपने सुन चुकी, काफी भाषण हो चुका है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। आप लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आशीर्वाद और आगे का कार्यक्रम धन्यवाद। हैदराबाद के अंदर हम आए हैं, यहाँ तक हम रीच हुए हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन। मैं आपके साथ एक खड़ा हुआ हूँ, बोले तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है कहाँ से शुरू हुआ है। अगर हम शुरू किए तो है तो उसको कहाँ पर भी एंड तो नहीं करना ना। तो वही मुद्दे से, वही मेन मोटिव से हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप हर स्टेट पे अपने टीम को फॉर्म करते हुए इंटरनेशनल लेवल पे आज तक पहुंचे हैं, बाय द सपोर्ट ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी और बाय द सपोर्ट ऑफ आवर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर मैम एंड डायरेक्टर साहब के तरफ से भी आप जो साथ बोले इंटरनेशनली वी विल डू प्रोग्राम बोलते इंशाल्लाह जरूर हम इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रोग्राम करेंगे और एक्टिविटीज को भी हाईलाइट करेंगे बोलते मैं आप सबके सामने मैं बोल रहा हूँ। और उसके साथ जो स्टार्टिंग पॉइंट जो हुआ है बोलना वो कहाँ से हुआ है आप सबको पता चल रहा है बोलते मैं आपके सामने बोलूँ। तो ये मैं जब पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में, तो एक कॉलेज का लीडर था, तो आप सब जानते हैं कि स्कूल को रहते स्कूल प्रिंसिपल लीडर वो समथिंग एसपीएल, तो उस कॉलेज का एक लीडर था। वही लीडरशिप क्वालिटी को हम मेंटेन करते थे। वो क्वालिटी को जब मेंटेन करते थे हमारे दिमाग के अंदर एक अल्लाह के बंदे आके तो थॉट को हम हमारे जो स्टूडेंट के दिमाग के अंदर डालेंगे। वो अल्लाह के बंदे फरिश्ते के रूप में उस टाइम पे आए थे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, सीआरटी बोलते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग क्लासेस बोलते हैं। उस क्लासेस में हम जो सुने हैं
तो अपने वो जो है ना अपने बिहेवियर को बदला देता है, अपने कैरेक्टर को बदला देता है वो क्लासेस। जब मैं स्टूडेंट एज में एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ से वो क्लासेस सुने थे, हम एक ट्रस्ट स्टार्ट किया उस टाइम में, उसका नाम है फ्रेंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट। द मोटिव ऑफ द ट्रस्ट इज वी कैन नॉट हेल्प एवरीवन बट एवरीवन कैन हेल्प समवन, दैट समवन कैन हेल्प एनीवन। लेट अस शो दैट वी आर one until people say we go on, until people say we go on। यही मोटिव को उस टाइम पे एक अल्लाह के बंदे जो फरिश्ते हमारे दिमाग के अंदर डाला था, वो हैदराबाद के रहने वाले हैं और उसके साथ साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और उसके साथ साथ वो मेरे खास भाई है, वो मेरे टीचर ही नहीं है, वो मेरे भाई है, मेरे वेलविशर है, मेरे सपोर्टर है। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन उनकी तबीयत का भी ख्याल न रखते हुए वो अपने पास आप सबके साथ आप ये प्रोग्राम देखना बोल के आ चुके हैं। उनका नाम है मुश्ताक मोहम्मद मुश्ताक सर। मैं आपका नाम डायरेक्ट ले ले माफ करना, आप तो मेरे टीचर है, टीचर का नाम जबान से रहने के लिए पर करना पड़ता है। तो मैं आपको अपने अनेचर की फैमिली को और यहाँ जो सोशल सर्विस करें सबको मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। प्लीज आप स्टेज को ऊपर आइए, मोहम्मद मुश्ताक सर प्लीज आइए। ये मोटिवेशनल स्पीच से ये डॉक्टर मुजाहिद को बना दिया और डॉक्टर मुजाहिद की तरफ से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डॉक्टर फहीम साहब को बना दिया, डॉक्टर अब्दुल शरीफ साहब को बना दिया, डॉक्टर शेख फराज शेख साहब को बना दिया, ऐसा डॉक्टर हमारे टकराल साहब को बना दिया। एक मुजाहिद की तरफ से इतने लोग को बना दिए। वो बनाने वाले बंदे कोई है बोले तो शुरुआत यहाँ से हुई है। वो कहाँ से बोले तो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जो हमारे साथ है, मत देखिए वो गुरु देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव। वो बोलते हैं मैं तेलुगु थोड़ा वीक हूँ, थोड़ा माफ करना, कुछ गलती हो गया तो अपने हमारे गुरु को मैं इंट्रोड्यूस करने का मौका अल्लाह ताला ने मुझे आज के दिन आपके हैदराबाद के अंदर अपने हैदराबाद के मोटिवेशन स्पीकर और मेरे गुरु को इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया है। मैं इंट्रोड्यूस करूँ आप सबको। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बिग क्लैप्स या इनको ये करें कि हमारे गुरु जी है और ऐसे मुजाहिदों को, ऐसे डॉक्टर मुजाहिद जो सोशल सर्विस के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से इतने टीम को बनाए हैं, ऐसे मुजाहिद को और भी आप बनाना है। आपके बातों से ऐसे बहुत सारे सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सोसाइटी के अंदर बनना जरूरी है बोल के मैं चाहता हूँ सर। आपकी तरफ से बस 1 मिनट के लिए हम सबको मोटिवेट करें, बस 1 मिनट के लिए। Thank you everyone. It's been an honor and a pleasure to be standing in front of you people out here. As you heard, my name is Mushtaq and I am based out of Hyderabad. And I just want to say, just take a minute of yours because I understand the time is like overboard now and we can't really go on with some kind of a talk here. I personally believe that your IQ is your intelligence quotient that allows you to learn skills and make a living. Please listen carefully everyone. Your IQ is your intelligence quotient that allows you to learn a skill and make a living. Your EQ is your emotional quotient which allows you to practice a will and make a life. Your SQ is your spiritual quotient. It plugs the hole in your soul. As human beings that we are sitting here, I very honestly and fundamentally believe that your IQ plus EQ plus SQ is the real you. Together, guys. So, somebody has said, I think, I'm sorry about the names because I don't know, but somebody here said that your journey, your life begins from here after your doctorate. I mean, it doesn't end here, right? We all have to believe that this life has been given to us as a matter of fact because we have to prove a point, not just to the world, but to somebody who's above there. You call it God, you call it Allah, you call it Bhagwan, whatever you call, but we believe that there's one life out there as well. And this life has been given to us as a test, as something that we have to do something for others.
दुनिया में हर कोई इंसान, टू बी ऑनेस्ट, आज के ज़माने में अपने लिए बहुत जीता है, लेकिन मैं ऐसे मानता हूँ कि इंसान वही है जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी थोड़ा जिए। और ये प्लेटफॉर्म आई थिंक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी कि आप दूसरों के लिए कुछ करो, क्योंकि इंसान तो दुनिया से चला जाता है, उसके बाद उसकी बातें, उसकी यादें दुनिया में रह जाती है। सो प्लीज कम टुगेदर एंड एज इंडियंस, एज हम जो भी मजहब के हैं, हमारे हमारा जो भी कास्ट के हैं, उन सब चीज़ों को बाजू लगा के एज इंडियंस लेट्स ग्रो टुगेदर एंड प्रूव द वर्ल्ड दैट इंडिया इज नो लेसर देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। 1 मिनट सर प्लीज़। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि सरप्राइज़ हुआ है हमारे लिए। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर HMD मुजाहिद साहब के गुरुजी हैं, तो हम तो कुछ आपको रिकग्नाइज़ नहीं कर सके, लेकिन ये 4 लाइन से आपको रिकग्नाइज़ करते हैं। अच्छे बुरे की तुमको खबर दे जाऊंगा, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे जाऊंगा, चेहरे को पढ़ने वाली नज़र दे जाऊंगा, चेहरे को पढ़ने वाली नज़र दे जाऊंगा। यारो मैं इस ज़माने का संग तराश हूँ। संग तराश मीन्स यू नो या जो मूर्ति को तराशते हैं। यारो मैं उस ज़माने का संग तराश हूँ। ये लाइन पर गौर करिए कि वो मोटिवेशनल स्पीकर साहब ने मुजाहिद साहब को क्या किया। यारो मैं इस ज़माने का संग तराश हूँ कि पत्थर को बोलने का हुनर दे जाऊँगा। नाउ अब घड़ी आ गई है। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। फूलों में जो खिलता है, कांटों में जो पलता है, फूलों में जो खिलता है, कांटों में जो पलता है, तो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। नाउ इंट्रोड्यूस तरनजीत कौर ठकराल, a graduate in Bachelor of Arts with a diploma in technical education. She is an accomplished trainer known for her effective teaching methods and dedication to skills development. She has been honored with the Best Trainer Award and the Samaj Seva Award for her excellence in training and contributions to social service.
Her commitment to empowering individuals and community welfare makes her truly inspiring. Please join me in applauding this excellence and dedication. Now next, Mr. M. Balram Swami. Mr. M. Balram Swami. आसमान और भी हैं. Now I would like to invite our next distinguished awardee, Mr. Balram Swami sir. Bachelor of Commerce Honours from Osmania University. He is a successful businessman known for his integrity, leadership and entrepreneurial excellence. Alongside his professional achievement, he is actively involved in social service initiatives and human rights activities, reflecting his strong commitment to societal welfare and community development. Let us welcome him with a big round of applause. Banerjee Kumar. Please, Banerjee Kumar. Now next, Mr. R. Banerjee Kumar. Mr. R. Banerjee Kumar. मिस्टर बनर्जी कुमार के लिए कांटों में जो खिलता है फूलों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है फूलों में जो तारीख बदलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है. Mr. R. Banerjee Kumar, a highly accomplished academician, he holds multiple prestigious qualifications including MA in Literature, B.Ed, MPhil, LLB and a PhD. Reflecting his strong academic foundation, he has served as a teacher, lecturer, assistant professor, including mentoring IAS aspirants, showcasing his dedication to education and student success. With his vast experience and commitment to knowledge dissemination, he continues to inspire and empower young minds. मैं सभी अवॉर्डीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने यूनिफॉर्म रिमूव नहीं करेंगे तब तक ओथ सेरेमनी नहीं होगी. आप सबका पूरा ग्रुप फोटो होता है तब ओथ सेरेमनी होती है, उसके बाद अपना ड्रेस आप निकालेंगे. नाउ नेक्स्ट मिस्टर गोविंद सर के लिए 2 लाइन. ना पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, ना पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मौन करने का हुनर रखता है वो. Mr. L. Okay, thank you. Mr. Alagadala Buratnam Govind sir, a diploma holder in civil engineering. He is a highly experienced entrepreneur with over 30 years of excellence in the business sector, known for his resilience, leadership and strategic vision. Alongside his professional success, he is a dedicated social worker, actively contributing to community development and welfare initiatives. His commitment to both business excellence and social responsibility make him a truly respected and inspiring personality. Now next, Mr. Sayyid Muhammad Hussain sir. वो लेफ्ट साइड टेबल है सर, वहाँ पर सिग्नेचर करना है. मिस्टर सैयद मोहम्मद हुसैनी के लिए 4 लाइन. अपने शागिर्द को मंजिल का पता देता है, अपने शागिर्द को मंजिल का पता देता है, ऐसा दिल से खुदा सबको कहाँ देता है. जानता खूब है ये बात ज़माना सारा, जानता खूब है ये बात ज़माना सारा.
Mr. Saeed, respected linguistic teacher. He holds a post-graduation in Arabic from Falah University, along with Alim and Fazil from Jamia Nizamiya, and a diploma in Arabic from National Council for Promotion of Urdu Language. With over 15 years of teaching experience and recognition as a best teacher and an inspiring speaker, he has made remarkable contributions to Arabic education and spiritual learning, especially in Sufism. Now next is Mr. Jogendra Singh Bagra sir. यहाँ सभी हजरात एसी में बैठे हुए हैं, कहीं अपने हाथ जम ना जाएं, अपने हाथ को गरमाएं, दोनों हाथ से क्लैप करकर। मिस्टर जोगिंदर सिंह बजाज सर के लिए 2 लाइन। ना मैं उनको जानूं ना ये मुझको जाने, ना मैं उनको जानूं ये ना ये मुझको जाने, मगर दिल बुलाने को जी चाहता है। Mr. Joginder Singh Bagga, a graduate in Bachelor of Commerce Honours from Osmania University. He is a dedicated businessman known for his strong leadership, strategic planning and effective business management. Alongside his professional journey, he is actively involved in social service, initiatives and human rights activities, reflecting his commitment to community welfare and social responsibility. Now next, Madhusudan ma'am. Ms. Judy Madhusudan Rao ma'am. ज्योति मधुसूदन राव के लिए ही नहीं, आसमानों के लिए हौसला भी चाहिए उड़ानों के लिए। Mrs. Judy Madhusudan Rao, a graduate in English literature, she is a dedicated professional committed to social justice and women empowerment. She currently serves as a Telangana State Vice President Women's Cell at International Human Rights Protection Commission, where she actively promotes human rights initiatives and community development. Known for her leadership, communication skills and impactful advocacy, she continues to inspire and empower society. Now next, Mr. Koyalkar Chandrasekhar. तो चेहरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे मुझे जान जाओगे। Mr. Koyalkar Chandrasekhar, a graduate in Bachelor of Commerce, he is a dedicated businessman known for his strategic planning, leadership and professional integrity. Alongside his business activities, he is actively involved in social service initiatives and community welfare programs, contributing towards the upliftment of underprivileged section of society. It's time. Mr. Sandipalli Kranti Kumar. Mr. Kranti Kumar के लिए 2 लाइन। नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, तुम बुलंदी पर रहो, दिल की यही आवाज है। Mr. Sandipalli Kranti Kumar, a managing director of KRTV and a dynamic media leader, he is known for his powerful storytelling and large-scale social impact, having reached millions through his content with over 3,000 ground-level interviews and collaborations with reputed media platforms. He has consistently highlighted real societal issues and amplified unheard voices.
His work continues to drive public awareness and empower communities through impactful digital media. Now next, Mr. Sheikh Munir Ali. Mr. Sheikh Munir Ali. मुनीर अली साहब के लिए 2 लाइन। खुद अब बस में जहां का और ही अंदाज है, Mr. Sheikh Munir Ali, a postgraduate in Master of Arts, he is a dedicated businessman known for his strategic approach, leadership and professional integrity. Alongside his business pursuits, he is actively involved in social service, supporting underprivileged individuals, orphans and community welfare initiatives. His commitment to both professional growth and social responsibility make him truly commendable. Now next, Mr. A. Naveen Kumar. Mr. A. Naveen Kumar. नवीन कुमार के लिए खौफ जुल्मत, एक नई सुबह का आगाज यहीं से होगा। Mr. A. Naveen Kumar, ऊपर चढ़ गए, इधर आ रहे थे। Electronics and Communication Engineering from Jawaharlal Nehru Technological University, Anantapur. He is currently serving as a sales manager at Veritas Finance Services Private Limited. With a strong technical background and a professional expertise, he continues to contribute effectively towards organizational growth and excellence. Now next, Mr. P. Pannambalam. Mr. P. Pannambalam. सर के लिए मुस्कुराते हुए वो मजमुआ अगियार के साथ, मुस्कुराते हुए वो मजमुआ अगियार के साथ आज यूं बस में आए हैं कि जी जानता है। Mr. P. Pannambalam, a graduate in Bachelor of Arts and History, he is an experienced professional with over 21 years of service as an LIC agent, known for his reliability and dedication in the insurance sector. Alongside his professional journey, he has devoted more than 30 years to social service, actively contributing to community welfare and upliftment. His integrity, discipline and commitment make him a truly respected and inspiring individual. Raghuram. आई है 21 है अभी। रघुराम। नेक्स्ट मिस्टर आर रघुराम पालड़ू। बाहर आई खिली कलियां, हंसे तारे चले आओ। बाहर आई खिली कलियां, हंसे तारे चले आओ, तुम्हें आवाज देते हैं ये नजारे चले आओ। Where is he? Okay. Mr. Raghuram Paligadu, a graduate in Bachelor of Science, he is a results-driven professional with over 25 years of experience across IT, finance and business management. Currently serving as a program coordinator, he has been actively leading community development initiatives, organizing welfare programs and empowering rural communities. His strong leadership and dedication to social impact make him a truly inspiring personality. Next, Mr. V. Rajashekar. Mr. V. Rajashekar. An experienced agriculturist and entrepreneur, he is actively engaged in pomegranate farming and export, contributing to agricultural growth and sustainability. Alongside his professional work, he is a committed social worker associated with International Human Rights Commission, actively participating in community welfare initiatives. His dedication, discipline and service-oriented approach make him a respected figure in the society. Now next, Mr. L. Ravinder. L. Ravinder. Mr. L. Ravinder. Is here? Mr. Ravinder is there?
हैं ज़्यादा। हाँ एल बड़ी रविंद्रा। Mr. R. Ravindra Nayak, a postgraduate in Master of Arts, he is serving as a sub-registrar known for his integrity, administrative excellence, and commitment to transparent public service. Alongside his professional responsibilities, he is actively involved in social service, supporting underprivileged individuals, and contributing to community welfare initiatives. His dedication to both governance and society is truly commendable. K. Subramaniam. Now next, K. Subramaniam. Mr. K. Subramaniam. मैं ये जो डाइस के पास ठहरे हुए हैं वो हजरात से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पीछे हट जाएं। के सुब्रमण्यम। Accomplished professional on a PhD pursuing, he brings over 19 years of experience across IT entrepreneurship and social development. As the founder of multiple ventures, he has empowered thousands through skill development initiatives and contributed significantly to rural and economic growth. His visionary leadership and commitment to sustainable development make him a truly inspiring personality. Now next, Mr. Surender Pal Singh sir. Mr. Surender Pal Singh sir. सुरेंद्र पाल सिंह सर के लिए मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला बख्श होते हैं, मुकद्दर जिनके ऊंचे आला बख्श होते हैं, जिंदगी में इम्तिहान भी उन्हीं के सख्त होते हैं। सो गए। Mr. Surendra Pal Singh, sir, a graduate in Bachelor of Commerce from Osmania University. He is a successful entrepreneur known for his excellence in the catering industry and his strong business leadership. He has been honored with the Best Catering Service Award by the Times of India and also recognized as a Best Social Worker for his contributions to community welfare. His dedication to both professional success and social service make him truly inspiring. I request Mr. Sayyid Riyaz साहब। अभी डॉक्टर लेने के बाद डॉक्टर पहले जाइए। शायद डॉक्टर रियाज साहब के लिए खूब है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। Dr. Syed Riyasir, a highly experienced Ayurvedic medical practitioner with over 25 years of dedicated service. He holds a diploma in medical science Ayush and a Bachelor of Science from Osmania University. He has been honored with multiple awards for organizing medical camps and his outstanding social service. Reflecting his commitment to community health and welfare, his compassionate approach and contribution to holistic healthcare make him truly admirable. Now next, Mr. Vinod Jain, sir. Mr. Vinod Jain. विनोद जैन साहब के लिए दो लाइन। जमीन वालों से ये कहकर तुलू होता है सूरज, जमीन वालों से ये कहकर तुलू होता है सूरज, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। Mr. Vinod Jain, a graduate in Bachelor of Commerce, he is a successful entrepreneur known for his strategic thinking, ethical business with the Best Businessman Award 2022 and the Best Social Worker Award 2025 for his outstanding contributions in both business and community welfare. His dedication to professional growth and social service makes him truly inspiring. Congratulations. Now next,
मिस्टर शेख यासीन साहब, शेख यासीन साहब प्लीज। यासीन साहब के लिए इल्म बढ़ता है कोई उसको घटा नहीं सकता, इल्म बढ़ता है कोई उसको घटा नहीं सकता, ये वो दौलत है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। मैं तमाम अवॉर्डीज डॉक्टर्स, नए डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी प्लेस पर नए डॉक्टर से जो अभी सर कुछ ऑपरेशन करा ऑडियंस में जो ठहरे हुए नया डॉक्टर बोल के ऐलान करे अभी सर, नया डॉक्टर के साथ कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हुए बात। लास्ट लिस्ट के लास्ट एंड स्पेशल इनका मैंने बोली, इनका नहीं बोली। यासीन, शेख यासीन साहब। Mr. Sheikh Yasin, a dynamic entrepreneur, he is actively engaged in the UPVC window supply business with over 5 years of experience, known for his professionalism, quality service and customer-focused approach. Alongside his growing business journey, he is deeply committed to social service, contributing to community welfare and supporting underprivileged sections of society. His dedication, integrity and balanced approach make him truly commendable. I humbly request everyone, please be seated. Please maintain silence and take your seats. It's time to honor our beloved Justice Khan Sahab Basha Nawaz Khan. काफिला हुआ करता है, एक दिन इनके पीछे काफिला हुआ करता है। मैं जब लास्ट ईयर प्रोग्राम में आया था हैदराबाद, मैंने जज साहब से वादा किया था कि मैं आपको एक प्रोडक्टी अवार्ड देना चाहता हूँ। मैंने आपका प्रोफाइल अपने यूनिवर्सिटी को मैंने फॉरवर्ड किया था और हमारी यूनिवर्सिटी ने आपको 2 चीज़ से नवाजा है। एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और द मोस्ट प्रेस्टिजियस डॉक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी ऑनरे कॉसा अमेरिकी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको आज दिया जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो। What you have done to the community in provinces, congratulations. Justice Khan Sahib Basha Nawaz Khan, a distinguished legal professional and former special metropolitan magistrate in the criminal courts of Hyderabad. He is widely respected for his integrity and commitment to justice, a recipient of prestigious honor. कल ये तागे निकल जस्टिस बादशाह नवाज खान साहब से हमारे ये सब पढ़ना डालते हैं हमें रोज। अच्छा, तो स्पेशल फॉर्म में अच्छा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ये सब डालते रहता हूँ। तरीके से जो है हम ऑनर करने जा रहे हैं। ये बोलना है आप ही प्रैक्टिस Citation of honor presented to Justice Khan Sahab Basha Nawaz Khan. The International Human Rights Protection Commission proudly confers this citation of honor upon Justice Khan Sahab Basha Nawaz Khan in recognition of his exemplary service, unwavering integrity and profound dedication to the cause of justice and humanity. Through his distinguished judicial career, Justice Khan Sahab Basha Nawaz Khan has upheld the highest ideals of fairness, equity and constitutional values. His judgment have reflected not only exceptional legal acumen but also a deep sense of compassion and responsibility towards society, particularly in uplifting the marginalized and protecting fundamental human rights. In recognition of his extraordinary wisdom,
balanced judgment and unblemished record of justice. He was reappointed as a judge even after his retirement, a rare honor that stands as a testament to the immense trust and respect he commands within the legal and social spheres. Beyond the bench, his continued engagement in social welfare activities further exemplifies his lifelong commitment to the betterment of humanity and the resolution of societal challenges with dignity and foresight. In honoring Justice Khan Sahab Basha Nawaz Khan, we celebrate a legacy defined by integrity, service and enduring dedication, an inspiration for generations to come. We proudly honor Justice Khan Sahab Basha Nawaz Khan with this citation by International Human Rights Protection Commission, Telangana State. तेलंगाना वाले स्टेट वाले बाजू रहना पहले नहीं चलो सामने थैंक यू सर चैरिटेबल ट्रस्ट मैडम के बाद हाँ नहीं मैडम के बाद राजेंद्रन सर के साथ के बाद सो इनका नाम अमीर अजीज है. Now it's time to honor Dr. Pratima Madam, Vice Chancellor of the American University. ये आर क्या है मालूम है, इनके फादर मदर का नाम पे ट्रस्ट चला है. सिर्फ 5 मिनट्स बाकी है जी. साजिदा अजीज नेक्स्ट. हाँ ये अजीज राही, तो फुल फॉर्म ऑफ ये साजिदा अजीज राही. ये चैरिटेबल ट्रस्ट के नीचे बहुत से लोगों को बिना किसी को बताए नंबर ऑफ टाइम्स मदद जा रही है. ये अनाउंस करके अपन बुला ये फादर मदर के नाम से चला नहीं हो क्या. एक सेकेंड ऊपर रखो ये दो भी. मुश्ताक सर जो मुझे सर के साथ हाँ उनको उसके बाद तो इनको अच्छा इंस्टीट्यूशंस. Now I would like सभी ऑनर हुए हैं, लेकिन ये नाइंसाफ़ी रहेगी जो यहाँ पर सुबह से काम करे हैं उनको ऑनर करने के लिए डॉक्टर सैयदा आयशा को मैं तेलंगाना स्टेट की जानिब से एज पर एन एजुकेशनिस्ट अपने ज़्यादा तालीम के साथ साथ सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा साथ देती हैं और सभी से ख्वाहिश करूँगा कि अपने हाथों को थोड़ी सी ट्रीटमेंट दें. थैंक यू सर. Now next. नौजवान हमारे within 1 minute. एम.ए. लतीफ़ अंसारी. एक और मैं हमारे तेलंगाना स्टेट के सीनियर मेंबर और हमारी सुनो के डायरेक्टर
सरदार सतनाम सिंह साहब, उनको भी ऑनर किया जाएगा। वो काफ़ी अपने सर्विसेज करते हैं। मेरा गिफ्ट Now, Mr. Dr. Sayyid Azhar. Dr. Sayyid Azhar is also a very great social worker. This is mine. Director of the American University and Vice Chancellor of American University. तमाम अवॉर्डीज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रेडी हो जाएं। उसके बाद पूरे डिग्री होल्डर्स, पूरे डॉक्टरेट्स पूरे पीछे आएंगे। ग्रुप फोटो होगी, उसके बाद ओथ सेरेमनी होगी, उसके बाद वोट ऑफ थैंक, उसके बाद लंच फॉलो होगा। हौसलों से थके नहीं। A very congratulations to Payum sir from the national team. Really आपकी जो हार्ड वर्क है काबिल तारीफ है। जितना भी आपकी तारीफ कम की जाए बहुत कम है। Thank you Payum sir. Thank you very much. Muspati and Nyanendra Naik. Thank you the young talent of IHRBG please. So please give the main all of you everyone. Clap for you please. And as well as I request all the award holders, doctorate award holders, please get ready for the oath ceremony. तैयार हो जाइए, ठहर जाइए प्लीज स्टेज पे आने के लिए। As well as I request all the dignitaries and as well as the audience also स्टेज खाली करें। वो एक्सेप्टेंस का आत्मरो సో మా యొక్క మనసుకు చాలా దగ్గరైన వ్యక్తి లోకేష్, టెక్నికల్ ఇన్ఛార్జ్ లోకేష్ థ్యాంక్ యూ లోకేష్. As per the request of our chief guest, Vice Chancellor Madam, का ये रिक्वेस्ट था कि जस्टिस बादशाह नवाज खान साहब का एक्सेप्टेंस आपका Good day to everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste, namo namah. Sat Sri Akal. Good afternoon. And everything is going on in what matter is going on there here. सर कुछ नहीं मिला। सर All secretary. And Pratima Madam, Pratima Vice Chancellor, Pratima Madam, respected Jacob Saab, respected Fahim Saab, respected Mujahid Saab, respected Shoaib Sahab, respected Rajendra Sahab, respected Firoz Begum Sahiba, respected Ali Sahab, respected Mustaq Sahab, respected Riyad Sahab, respected all above and dignitaries, you all. Good day, good afternoon, and good day to everybody. Actually, we came here under one shelter without any qualified intentions. Actually, we would like to tell you what is the human right and what is the law, what is the constitution, what is the American this university is already given to doctorate to whom and what. This has been already explained to each and everybody, and Mr. Saab and Mujahid Saab and all our friends has already given the statements and given good speech, very good speech, marvelous speech, for understandable speech for everyone. So now I would like to finish within 1 minute my lecture. I felt very happy and proud to see you all here, to meet here. Ni, na, kanna, manna,
sorry, I don't know Telugu well. Although just I'm trying to talk with in Telugu, my Telugu friends, I don't know that I'm trying. నీ నా కనమన కుల మత వర్గ భేదము లేకుండా ఎంతో దూరం నుండి డాక్టరేట్ పదవులందరికీ చుట్టానికి వచ్చిన మీ అందరి ప్రేక్షకులకు, ఇక్కడ భాగస్థులకు, ఉన్నవారికి, స్టేజ్ పైన కూర్చున్న మహత్తములకు, ఈ కండక్ట్ చేసిన వారి అందరికీ, యాంకర్ చేసిన వారందరికీ ఎటువంటి భేదాలు లేకుండా ఈ దేశం నాది, ఈ రాష్ట్రం నాది, ఈ ప్రజలు నావారు అని ముందుకొచ్చి ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ పెట్టిన మీ అందరికీ వందనం, అభివందనం, శుభాభివందనం, ప్రేమాభివందనం. Especially I want to tell you, హ్యూమన్ రైట్స్ అనేది 1947 సంవత్సరం ఆగస్టు 15వ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 1949, జాగ్రత్తగా వినండి, మనకి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది international human rights and what is the law of constitution of our great India. So then I would like to tell you before you all here, constitution రాకముందు, కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంకా కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వలేదు, దానికి ముందు హ్యూమన్ రైట్ అనేది. అయితే హ్యూమన్ రైట్ అనేది ఒక కామన్ లా అన్నమాట. ఈ కామన్ లా यही हमारा हथियार है, भारत देश को कमाने का, लाने का यही हमारा हथियार है, यही हमारा ह्यूमन राइट है. ये ह्यूमन राइट अपना ये है कि हम हर चीज जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो मांग सकते हैं, वो जो चाहते हैं वो दे सकते हैं. ये राइट, ह्यूमन राइट बाद में हम लोग దాని తర్వాత మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ లో అదే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు, స్వర్గీయ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మనకి ఇచ్చిన ఒక కానుక అది కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ లోనే మనకి అన్ని విధాలుగా ఉంది కాబట్టి మనం ఇలా నడిపించుకుంటూ కాన్స్టిట్యూషన్ వస్తున్నాము. ఈ రోజుల్లో రాజకీయాలు ఎటువంటి రాజకీయాలు అందరికీ తెలుసు, కానీ ఇటువంటి రాజకీయాల్లో మనం వెళ్ళకూడదు. మనం మన రాష్ట్రానికి, మన ప్రజలకి మనం ఏం చేశాం, మన ప్రజలకి మనం ఎంతవరకు న్యాయం చేస్తున్నాం, మన ప్రజలకి మనం ఎంతవరకు కాపాడుకుంటున్నాం, మన ప్రజలకు ఎంతవరకు మనం ప్రజలకి మనం సహాయం చేస్తున్నాం అనేది మన ఆకాంక్ష అనేదే ఉండాలి ఇక్కడ. అంతేగాని మనకి దేశం ఏమిచ్చింది, మనకి ప్రజలు ఏమిచ్చారు, మనకి ఏమిచ్చారు అనేది కాదు. మనం దేశం కోసం ఏమిచ్చాం, మనం ప్రజల కోసం ఏం త్యాగం చేశాము, అదే డాక్టరేట్ యొక్క నిర్వచనం. పదార్థ నిర్వచనార్థం ఇదే డాక్టరేట్ యొక్క పరువు ప్రతిష్ట. ఇటువంటి పరువు ప్రతిష్టని కాపాడవలసిన బాధ్యత, విధి, బాధ్యత, కర్తవ్యం మనలో తప్పకుండా ఉండాలి, ఉంది తీరాలి. ఇదే భారతదేశం యొక్క బ్యూటిఫికేషన్. భారతదేశంలోనే నీ నా తన మన కుల మత వర్గాలు భేదాలు లేవు. But God is one. అన్నట్టుగా మనం అందరం అనుకున్నది సాధించేంత వరకు మనం సాధించాలి. సాధన ఏంటి? మంచితనం. నోట మేము 1 లక్షల కోట్లు ఎవరికి అడగటం లేదు, అడిగేంత మాత్రం ఎవరు ఇవ్వడు కూడా. కానీ లోకతరంతో చేయనంత మన సహాయం, ఎంతవరకు మనం సహాయం చేయగలుగుతాం అనేది ఇక్కడ మనం ఆలోచించవలసిన విషయం. ఇప్పుడున్న రాజకీయాల్లో ఎంతో మంది మేము శిక్షణ వేసుకుంటాం, ఇటు శిక్ష వేస్తాము, మళ్ళీ నేను అటు వెళ్ళి జైలుకి వెళ్ళి కంపెనీకి వాళ్ళందరికీ చూసుకుంటాను కూడా. నేను ఏ విధంగా చూస్తున్నారు, ఏ విధంగా చేస్తున్నారు, మళ్ళీ వాళ్ళకి నేను సపోర్ట్ కూడా చేస్తాను నేను మళ్ళా. ఎందుకంటే ఇదంతా మరి కావాలని ఎవరు తప్పు చెయ్యరు, పొట్ట కోసం గతి లేక తప్పు చేయటమే కానీ ఎవరు తల్లి కడుపులో నుంచి తప్పు చేయరు అనేది హ్యూమన్ రైట్ యొక్క నిర్వచనం. ఈ హ్యూమన్ రైట్ మనం రైట్ అంటే హక్కు తల ఎత్తి మాట్లాడాలి, తల దించి అడిగే హక్కు నిజవాడిది, ఒక భికారి.
మన విధానం కాదు, రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని కాపాడవలసిన వాళ్ళం. దేశాన్ని మనం సమృద్ధిగా పెంచుకుంటూ దేశ పరమ ప్రతిష్ట కోసం మన ప్రాణాలైన సరే సైతం త్యాగం చేయడానికి కూడా రెడీ అయి కూరుకున్నప్పుడే మన భారతదేశం యొక్క బ్యూటిఫికేషన్ ఇంకా అందచందాలతో కూడిన భారతదేశం స్వచ్ఛంద భారతదేశం అవుతుంది. సో కాబట్టి మై బ్రదర్ డాక్టరేట్ మీరు అందరికీ నా బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇవన్నీ హాఫ్ మినిట్ ఎందుకంటే ఆకలి అవుతుంది అందరికీ. నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ ఒక మానవత్వం పెంపొందించాలి, ఒక మానవత్వం చేయాలి, ఒక మానవత్వం చదువుకున్న వాడు, సహాయం చేసిన వాడు, తోటి మనిషిని మనిషిగా ప్రేమించేవాడు, తోటి మనిషిని మనిషిగా ప్రేమించేవాడు భారతదేశం అని బ్రదర్ జాగోపాల్ ఎంతో ధైర్యంతో భారతదేశానికి ముందు నడపాలనే ఉద్దేశంతో మీ అందరికీ భారతదేశంలోనే కాదు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా అందరికీ పేరు ఎంకరేజ్ చేయడానికి వాళ్ళు పూనుకున్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళు వచ్చి ఇంత డాక్టరేట్ డిగ్రీ ఇస్తున్నారు అంటే ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ఇది మనం అందరం వారి చదువు కూడా నిలబెట్టాలి. మనకి తోటి సహాయం చేస్తున్న బ్రదర్స్ అందరికి మనం సహాయపడాలి అనేది మన ముఖ్య ఉద్దేశము. నేను కంప్లీట్ గా అందరికి ఎవరి వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు సహాయం చేసుకోవటమే మానవత్వం. లేకుంటే అది దానవత్వం అనబడుతుంది, శైతానీయత అనబడుతుంది. మానవుడు దానవుడు, చేసినవాడు మానవుడు, చెయ్యకపోయినవాడు దానవుడు. సో కాబట్టి మనం అందరం కలిసి ఇప్పుడు భారతదేశానికి కాపాడాలి. మా అమెరికన్ యూనివర్సిటీ తరఫు నుంచి మనకి ఇచ్చిన ఈ పేరు ప్రతిష్ట మనం పెంపొందించాలి, అభివృద్ధి చేయాలి అనేసి మనం జాగోప్ గారికి, మేడం ప్రతిమ గారికి మేము మనస్ఫూర్తిగా మరొకసారి నమస్కారం చేస్తూ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఎవరైతే తీసుకున్నారో అందరికీ మేము మనస్ఫూర్తిగా నేను వందనం, అభివందనం, శుభాభివందనం, ప్రేమాభివందనం, नमस्ते। अभी ओथ सेरेमनी की बारी आप डॉक्टरेट खिलाओगे, उससे पहले डॉक्टरेट नहीं खिलाओगे, है ना? वो जो ओथ सेरेमनी में इधर आई बोलो, आई आपको अपना नाम बोलना है। जब 3 times whenever I, then you have to repeat your name and then follow me what I'm telling you. Okay? Thank you. जहाँ आई आएगा अपना नाम बोलो। Ready? So we are going to do an oath ceremony. Oath ceremony के बाद ही this is a procedure of the American University और इसके बाद ही convocation हम conclude करेंगे. So जब भी हम oath लेते हैं तो एक दिल आपके सर्टिफिकेट जो दिल के पास रख के आप हाथ रखिए डॉक्टरेट सर्टिफिकेट के साथ में जी. हाँ जी. All are in put right hand, hot. So please, your right hand should be what on your chest? Like this. Yes. एक सर्टिफिकेट ना मुझे सर आपका है सर, आपके लिए आपके साथ अच्छा हेलो महेश गेट माय सर्टिफिकेट. डॉक्टरेट सर्टिफिकेट. थैंक यू सर, वेरी kind. दूसरा वाला सर, ये दूसरा वाला इसका अवार्ड. राइट. I do solemnly affirm that and take this oath before the distinguished gathering that I shall dedicate myself to service the society by promoting a culture of peace
culture of peace, harmony, unity, irrespective of caste, creed, religion, color, or any discrimination. I commit myself to contribute towards the creation of a transformed civilization, one that is peace-loving, peace-living, peace-practicing, thereby striving to make India a sustainable, developed, and strong nation. I further affirm that I shall extend my support and a helping hand to the underprivileged and those in need, working with compassion, integrity, and responsibility. I solemnly affirm that I shall abide by the rules and regulations of the American University under the leadership of Professor Dr. Madhukrishan and uphold its value and mission with sincerity and commitment. Jai Hind, Jai Bharat. Please stay everyone. Before all of you, this is what the central instruction body. Today you are receiving the doctorate award. This is purely only for the honorable doctorate. You should not use for the grinning. This is not qualified for you. That is the main reason. Any other certification attested, that is not value for this one. Okay? You put the name also. Before that, you don't put the name for small letters. Small letters only eligible for the who are the research scholar than doctorate. That only is given the small letters. Whenever you are putting the name, you put the only for doctorate for caps only. This is the main reason. International are watching for this one. If you are putting the small letters, any other attested, you put the Xerox copy and everything, immediately catch by you. This is what the government rules. I will tell you that is the main reason. Please keep it up. Thank you. भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाता जन गण मंगलदायक जयाय भारत भाग्य विधाता